Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel which is by GSE. Okay students, देखो हमें previous class से पढ़ी थिलु magnetic field intensity due to a bar magnet at any point on the equatorial line. केस टू पढ़ा हिथिला केस टू सेटा. So आज हमें देखिबा ଗୋଟେ important topic बा new topic हमें कहि परिबा. That is new topic रो ना कोन हला? New topic रो ना हला that is magnetic dipole. Magnetic dipole. Very important. Magnetic dipole in a magnetic field. Important short question 3 मार्क के आसी पर एटा. Okay, important short question, long question एटा short question 3 marks. Okay, magnetic dipole in a magnetic field. ता माने कोन गुटे magnetic dipole को जदी हमें magnetic field भीतर रखिबा कोड रखिबा magnetic field भीतर रहिले से कोन तयारी हेबो टॉर्क इज प्रोड्यूस. टॉर्क माने कोन? टॉर्क माने होजी तमर टॉर्क प्रोड्यूस हेबो. टॉर्क माने होजी रोटेशन. रोटेशन करिवो के डाइपोल ला कोन हेबो रोटेशन करिवो. जदी कोइ मैग्नेटिक डाइपोल को हमें जदी मैग्नेटिक फील्ड भीतर रखिबा कोन तयारी हेबो टॉर्क इज प्रोड्यूस. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड. तो फर्स्ट हमें देखिबा डायग्राम करिबा. तो एटी केस 1 ही अछि गुटे सिलेबस रे केस 1 फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. को केस पई फॉर यूनिफॉर्म. Okay, for uniform magnetic field. Okay, for uniform magnetic field. तो फर्स्ट हम डायग्राम करिबा. समस्त डू द डायग्राम कर दियो. दिस इज डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. देखो এটা কোন শো করছি. দিস শো यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field, that is B factor. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field, that is B factor. ये जो डाइपोल को रखो. सो दिस इज द डाइपोल. ओके, दिस इज A point, दिस इज S point. ओके, साउथ पोल भी कहि पर S point नहीं जोटा. ए रहला नॉर्थ पोल. दिस इज नॉर्थ पोल. दिस इज द नॉर्थ पोल. मन रखो, दिस इज द नॉर्थ पोल. दिस इज द साउथ पोल. हम S नहीं छु. ए रे ही नॉर्थ पोल रहला. देखो ए रे सब ए रे मन रखो, एटा नॉर्थ पोल रहिबो. दिस इज द नॉर्थ पोल. दिस इज द साउथ पोल. S नहीं छु. इति कोन हबो त O इज द सेंटर. हम O इज द सेंटर ने सेंटर ऑफ द डाइपोल. लेंथ 12 नहीं जो. 12 is the length of the dipole. 12 is the कौन? 12 is the length of the dipole. 12. Okay, 12 is the length of the dipole. Okay, 12 टा कौन? 12 is the length of माने AS for distance. AS is equal to, that is 12. AS is equal to 12. A point with a perpendicular draw करो. This is the perpendicular. Okay, then H with a perpendicular draw करो. AC रे टच करिवो. AC is the perpendicular. AC माने कोन? AC is the perpendicular. AC माने कोन? AC is the perpendicular distance. This is theta. एटा भी थीटा देखो, थीटा एंगल. ओके, एटी फोर्स कोन हबो देखो. ए पॉइंट रे फोर्स पड़िबो नॉर्थ पोल पई. दैट इज M into B फैक्टर. ए पॉइंट रे बा नॉर्थ पोल पई. तो साउथ पोल पई फोर्स कोन हबो देखो. ई विल सेम. दैट इज M into B फैक्टर. माने डाइपोल केमति हेबो देखो. मन सब डाइपोल एटी गोटे फोर्स पड़ला ऊपर टाणिबो. एटा तळको टाणला डाउनवर्ड. माने कोन हबो? दैट इज रोटेशन तयारी. रोटेशन हबा माने कोन? टॉर्क इज प्रोड्यूस. तो एटी थ्योरी कोन हबो? दैट इज let us consider a magnetic dipole. बुनिया वाला. Let us consider a magnetic dipole. Let us consider a magnetic dipole suspended. Okay, suspended in an में झुला है. Suspended in an uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Okay, देखो. Let us consider a magnetic dipole निया जायछि. Let us consider a magnetic dipole suspended in an uniform magnetic field. Okay, then dipole length निया जायछि. That is magnetic dipole length, that is equal to 12 निया जायछि. Okay, magnetic dipole length is equal to 12. Next, दुईटा पोल अछि, नॉर्थ पोल साउथ पोल. The two poles no N and S कर दोछि. N माने नॉर्थ पोल and S है ना. The two poles N and S
of pole strength m नहीं small m. Okay, small m is the pole strength. देखिए students, let us consider a magnetic dipole suspended in an uniform magnetic field झूला वाला dipole length है 12, dipole length है 12. Next, the two poles N and S, north pole and N माने north pole, S माने south pole. The two poles N and S of pole strength M, pole strength M नहीं देखो, of pole strength M, pole strength M experiences as a force MB factor. Okay, the two poles N and S of pole strength M experiences a force MB factor at A and S कर दे, A रे मन नॉर्थ पोल रे, S मन साउथ पोल रे, at A and S experience two equal and opposite forces कर दे, experiences two equal and opposite forces, MB factor at A and S. Next, these two forces, दुईटा force कौन कौन, एठी भी MB factor, एठी भी MB factor. These two forces constitute मान तैयारी के लिए constitutes a couple which tends to rotate. देखो स्टूडेंट्स, these two forces co-force MB factor दुईटा force, these two forces constitutes a couple माने कौन double, एठी भी MB माने double तैयारी couple हेले देखो. These two forces constitute a couple which tends to rotate, which exerts a torque tau, देखो रोटेशन करला माने कौन तैयारी हेला torque is produced. These two forces constitute a couple which tends to rotate, which exerts a torque tau. Tau टा तैयारी हेला, which exerts a torque tau. Okay, torque tau. Next, ये कौन है बी मान हूँ देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मन रख, बी माने कौन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी वेक्टर में जानि छ. ए टावर ऑफ फार्मूला कौन हबो देखो, टावर ऑफ फार्मूला हे जीवो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, between the two forces. देखो कौन फॉर्मूला टावर, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. आइदर फोर्स टा कौन, दैट इज MB फैक्टर. ओके, MB फैक्टर इनटू व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज AC is the perpendicular distance. Okay, AC रा वैल्यू कौन हबो, AC रा वैल्यू हबो देखो 12 sin थीटा, केमती हम कहूची AC रा वैल्यू इज नेक्स्ट टाउ इज इक्वल टू MB फैक्टर इनटू 12 sin थीटा. केमती हला एटा मन रखो, टाउ इज इक्वल कोन आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से फार्मूला पढ़ला देखो. नेक्स्ट, एठी 12 sin केमती हला देखो इन ट्रायंगल ACS रे. ओके, ACS रे व्हाट इज sin थीटा जानि छ P by H. P माने कोन परपेंडिकुलर, दैट इज AC. AC इज द परपेंडिकुलर, H मीन हाइपोटेन्यूज कॉर्नर, दैट इज AS. तो कौन हला sin थीटा इज इक्वल टू AC by AS. व्हाट इज AC, AS sin थीटा. AS लेंथ केते 8 रे, AS लेंथ 12 नहीं छ में, दैट इज AC इज इक्वल कौन हला AC इज इक्वल टू AS केते 12 sin थीटा. देखो स्टूडेंट्स, AC रो लेंथ केते हला, AC रो फार्मूला 12 sin थीटा. केमते हला देखो, AC हला AS into sin थीटा. व्हाट इज AS, AS रो लेंथ में 12 नहीं छ, 12 sin थीटा. तो AC जगह कौन पुट करा गला, AC जगह पुट करा जेते 12 sin थीटा. AC रखलु, AC रो वैल्यू कौन पुट करा गला 12 sin थीटा पुट करा गला. तो कौन हला दैट इज, एंड देखो इन ट्रायंगल ACS रे, ACS ट्रायंगल रे sin थीटा रो फार्मूला कौन P by H. P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेन्यूज. P माने कौन AC, AC द परपेंडिकुलर, H माने कौन AS ओठी देखो. तो sin थीटा इज इक्वल टू AC by AS. व्हाट इज AC, एटा मल्टीप्लाई हे जीवो देखो,
AC is equal to AS sin theta. What is AC? AS value 12 sin theta. Then tau मूल्य कौन है MB factor into 12 sin theta है. Next ठीक से मल्टीप्लाई करो. Tau is equal to 2 ml B sin theta. देखो 2 ml 2 गला 2 ml B रहला B sin theta ठीक है 2 ml B sin theta. ये 2 ml माने कौन 12 into m that is tau is equal to m B sin theta. ये m माने कौन that is ये m माने होची लिखि दिया m ର पुणी 2 ml that is magnetic dipole moment. कौन magnetic dipole moment अगर पढ़ाई छी magnetic dipole moment. Clear students? mb sin theta होची कौन this is the scalar form of torque. tau ର scalar form this is the scalar form of torque. एबे कौन करिबा if b ର value 1 नेबो और थीटा इज इक्वल 90 डिग्री. सपोज गुटे केस ता देखो b ର value 1 पुट करिवो थीटा ର 90 डिग्री पुट करो तो टाउ ର value कोन है टाउ इज इक्वल टू m 1 लिखा जीवनी m into sin 90 डिग्री. व्हाट इज sin 90 डिग्री 1 दैट इज टाउ इज इक्वल टू m हला. देख केते बेले टाउ टा m हबो म टॉर्क इज इक्वल टू केते बोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जेते बेले ए b ର value मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी value यूनिट हबो 1 हबो और थीटा ର value को 90 डिग्री हबो केते बेले कोन हबो टाउ इज इक्वल टू m हबो. ओके स्टूडेंट्स जेते बेले b ର value 1 थीटा ର value 90 डिग्री सेते बेले कोन हबो टाउ इज इक्वल टू m हबो. टाउ माने टॉर्क m माने होची मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म का कोन हबो नेक्स्ट हम देखिबा वेक्टर इज स्केलर फॉर्म. दिस स्केलर फॉर्म. नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क. देखिए स्टूडेंट टाउ ର फार्मूला कोन सब जान छ a क्रॉस b ର फार्मूला कोन ab sin थीटा. से भलिया एठी कोन हबो एठी mb sin थीटा अछि तो फार्मूला कोन हबो टाउ इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म. दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ टॉर्क. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. मन रखो स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क. ओके स्टूडेंट्स दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ टॉर्क. दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखिबा ए m रो यूनिट कोन व्हाट इज द यूनिट ऑफ m. देखो m रो यूनिट हबो देखो दैट इज m into 12 हला बा 12 into m तो m रो यूनिट हबो देखो एम्पियर into मीटर स्क्वायर एटा हो यूनिट SI यूनिट एम्पियर into मीटर स्क्वायर एटा हो SI यूनिट m रो. तो डायमेंशन कोन हबो डायमेंशन ऑफ m डायमेंशन ऑफ m हबो देखो दैट इज m रो डायमेंशन यूनिट तर फार्मूला लिखि दियो am रो स्क्वायर त माने कोन हला दैट इज a मान होची एम्पियर दैट इज a1 m स्क्वायर माने कोन l स्क्वायर हबो. तो ठीक से लिखले कोन हबो दैट इज m0 l0 l केते ह l स्क्वायर m0 l स्क्वायर t0 a1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ दैट इज m फैक्टर है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m फैक्टर. इट फैक्टर क्वांटिटी m फैक्टर. ओके this is the dimension of m factor. m factor माने कोन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. magnetic dipole that is moment. Clear students? What is dimension of m factor? m0 l square t0 a1. Okay next class से पढ़ीबा हमें what is called diamagnetic, what is called paramagnetic, what is called ferromagnetic. Okay students डाई माने कोन पारा माने कोन और फेरो माने कोन नेक्स्ट क्लास से पढ़ीबा. एटा सरला पर यूनिट सरी जीवो नेक्स्ट वीडियो रे यूनिट सरी जीवो. यूनिट सरला पर हमें ऑप्टिक्स स्टार्ट करबा. का ऑप्टिक्स स्टार्ट करबा. ऑप्टिक्स माने होची यूनिट 6 जोटा हला ऑप्टिक्स पढ़ीबा नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स जदी ए वीडियो जदी भल लागुची माने काइंडली लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पकड़थियो बेल आइकन को दबाई दियो. ओके स्टूडेंट्स बहुत इंपोर्टेंट वीडियो माने आसुची समस्त वाच करो और सिलेक्टिव क्वेश्चन भी देबी और मासे 2 मास पर समस्त को सिलेक्टिव क्वेश्चन दे देबी से भितर एग्जाम रे आसीबो. ओके स्टूडेंट्स समस्त वीडियो देखो और समस्त को शेयर करो. क्लियर स्टूडेंट्स बाय.